Hello? 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 हेलो सर, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बेटा? यस सर। Yes, sir. वालेकुम सलाम। आप कौन बात कर रहे हैं? मैं एलिन फातिमा। अच्छा बेटा, बस आवाज जब आ रही है तो मैं अभी थोड़ी देर में लेक्चर शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है थैंक सर। यू। यू आर वेलकम बेटा, एनी टाइम आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू सर। You are welcome, beta. Now today, beta, what we are going to start up with, the other day I did the third three-sector multiplier, a three-sector economy. Along with that, I have already discussed the multipliers now. So today we take up, I'll be going a bit slow. This is a bit technical topic, That's why I'm going a bit slow. Today, I'm going to take up the four-sector economy. Now, again to repeat, I'll say in my first lecture, when I was discussing about the model building, I discussed four sectors, right? And the last sector which we said was the international sector. So today, we take up the international sector and the level of income. In other words, that we are going to discuss about the four-sector economy. So far, what we did was three-sector economy. So today, I'm going to take up the four-sector economy. And now the four-sector economy is a bit complicated topic. So I'll be going very, very slow. If you want to write it up, it's up to you. If you do not want to write it up, it's up to you now. If you want to download the lecture, I think it will be much better. Faizan? Right, Faizan is not there. Now, what we do is that so far what we did was we were dealing with a closed economy. The economy, what is a closed economy? An economy that has not traded with other nation. Still three-sector economy, we take household sector, we took business sector, we took the government sector. Now, these three sectors, when taken into consideration and discussing the level of income, deals with the closed economy. Generally, we use the word closed economy. Now, people may ask you, or somebody may ask you, or your students may ask you, that what is a closed economy? Closed economy, in brief, is said to be an economy that has not traded with other nations. When we say international sector, naturally it means that the economy is dealing or is trading with the other economies also. So we are dealing with an open economy. That is, we are dealing or we are taking into consideration the net exports and net imports, etc. Clear so far? That is the basic difference between the closed economy and the open economy. Now, in this chapter, we will be basically analyzing the impact of international trade. Now, impact of international trade means the net exports and the net imports of a country. So we will be dealing with the impact of international trade upon the country's equilibrium level of income. What? To repeat, dealing with the equilibrium level of income. And we will be dealing with the international trade. That's why we say that we are taking into consideration or including the international sector. Now, international sector, as I said, repeat before also, that basically deals with imports and exports. Now, what are imports and exports? Here, what we do is we take up the imports and exports as autonomous variables. These are the two basic variables which takes out us from the closed economy and come to the open economy. So we take up imports and exports. Now, as an autonomous variables.
A country export domestic goods and services, meaning a country is going to export the product which is being produced domestically by it and import foreign made goods and services. To repeat, a country exports domestic goods and services and imports foreign made goods and services. That is the basic difference between the export and the import of a country. Import means that we try to import the foreign made goods and services. Export basically means that we try to export, we try to send out, we try to give to the other countries the products which are being produced domestically by a country. Thus, the result is an increase in exports increases the demand for domestic goods and services. What it does, it increase in export increases. But if export increases, everybody knows what does it takes place. It naturally increases the demand for domestic goods and services. When a country is going to demand some product from another country, like Pakistan is going to demand product from, say, from China or from any other country, from UK, America, Australia, New Zealand, any other country, naturally it means that it is going to, the export is going to increase the demand for domestic goods and services, while an increase in imports reduces it. Is it clear now? An increase in export increases the demand for domestic goods and services, while an increase in import reduces it. Now, how do we represent it diagrammatically? Now, exports are generally represented in economics by capital X, by capital X. Remember one thing, capital mean big X. क्योंकि उस दिन मुझसे किसी ने कहा है सर कैपिटल और स्मॉल में क्या फर्क होता है तो यहाँ पे हम कैपिटल कहते हैं तो बड़ा एक्स ABC जैसे हम कहते हैं तो बड़े ABC और स्मॉल ABC तो हम यहाँ पे उसको एक्सपोर्ट्स को कैपिटल X से डिनोट करते हैं और इंपोर्ट को कैपिटल Z से डिनोट करते हैं. टू रिपीट, exports denoted by X and imports denoted by Z. Like other autonomous changes in spending, cause a multiple change in the equilibrium level of income. Why I am taking up this sentence? The basic reason is that we are looking at the changes in the autonomous variable of imports and exports as a variable and its effect upon the level of income. That's why I have said causes a multiple change in the equilibrium level of income. Now, how do we represent it diagrammatically? Now, in one case, on y-axis, remember one thing, जो ऊपर से नीचे लाइन आती है, उसको हम y-axis कहते हैं, और जो सीधी लाइन जाती है, उसको x-axis कहते हैं, horizontal और vertical lines. तो y-axis पे हम domestic spending show करते हैं, क्या show करते हैं? Domestic spending. और नीचे x-axis पे हम क्या denote करते हैं? Income. क्योंकि हम interested हैं spending में और हम इंटरेस्टेड है इनकम में, और स्पेंडिंग और इनकम को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम मिलेगा. अच्छा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जनरली 2 सेक्टर या 3 सेक्टर में हम क्या कहते हैं? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट. कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, दैट इज कैपिटल C प्लस कैपिटल I. Capital C plus capital I. That is a straight line which we draw from the y-axis over and above x-axis. x-axis कहाँ पे intersect करता है? 0 पे, point जहाँ पे वो intersection करता है. तो वो point को मैं label करता हूँ, roughly उसको मैं कहता हूँ 0. O, 0.
0 से ऊपर होना चाहिए और आपके y एक्सिस कौन सा है? मैंने आपको पहले अभी बता दिया, आई हैव टोल्ड यू इट शोज अस द डोमेस्टिक सेविंग. नाउ द डोमेस्टिक सेविंग्स को वो टच करता है और स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं. और x एक्सिस और y एक्सिस में जनरली बुक्स में आप देखेंगे तो वहां पे एक लाइन ड्रॉ हो जाती है. वो मतलब ये है कि हम उस x एक्सिस को और y एक्सिस को इक्वल पार्ट्स में तकसीम करते हैं, जिसको इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं इक्वल 45 डिग्री लाइन. तो 45 डिग्री लाइन ड्रॉ करके, वंस यू ड्रॉ द 45 डिग्री लाइन, in that case over and above the point of intersection touching y axis, we draw a straight line, and that straight line is known as consumption plus investment. To repeat, capital C plus I. Since we are interested in the import and exports, the effects of imports and exports, so the over and above the line C plus I, we draw another line. We draw another line that is over and above C plus I. और उसको हम क्या लेबल करते हैं? C plus I plus X. That is consumption plus investment plus exports. X को क्या डिनोट किया है हमने? X पे on X हम कहते हैं imports are exports are denoted by capital X. So over and above the straight line touching y axis, which has been labeled, as I said before, consumption plus investment with a capital C plus I, over and above that we try to draw another line touching the domestic savings, domestic spendings, I'm sorry, which is shown on the y-axis, and that line is known as consumption plus investment, C plus I plus X. और previously मैंने आपको बता भी दिया था, X हमें क्या show करता है? Exports. Clear? और y-axis में, since we are interested in the equilibrium level of income, जहां पे C plus I line intersect करता है 45 डिग्री लाइन को, जहां पे, to repeat, wherever the straight line consumption plus investment intersects the 45 degree line, there we draw a perpendicular on the x axis, and we label it as an income y naught, as an income y naught. Y subscript 0, Y subscript naught जिसको हम कहते हैं O 0. Since we are interested in the domestic spending and the income level, equilibrium level of income, तो 45 डिग्री लाइन आपने जरूर मुझसे पूछना था या किसी ने आपसे पूछना था कि आप क्यों ड्रॉ कर रहे हैं जबकि C plus I plus X आपके पास गिवन है. C plus I 45 डिग्री लाइन हम इसीलिए ड्रॉ करते हैं कि जहां पे वो पॉइंट्स इंटरसेक्ट करते हैं 45 डिग्री लाइन को, वहां पे हम परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन वहां से पॉइंट पे ड्रॉ करके, और उसको लेबल कर देते हैं इनकम लेवल. इनकम लेवल इज जनरली डिनोटेड बाय वाई. सो डोमेस्टिक सेविंग on y-axis, sorry, domestic spending. I don't know why I'm saying saving again and again. I'm sorry for that. Domestic spending on y-axis and income level on x-axis. In between that, we draw a 45 degree line which divides the x-axis and y-axis into two equal parts. Wherever C plus I, straight line, C plus I, consumption plus income or investment, touches the 45 degree line, we draw a perpendicular to the x-axis and we label it as an income level. Whether you label it as y0, y0, y1, जैसे भी आप उसको label करते हैं, it's up to you because you are going to explain it then. What does y0 stands for? What does y0 stands for? And similarly, the other line is being touched by C plus I plus X. X मैंने previously क्या कहा था? Exports.
और Z को क्या कहा था? Imports. Exports and Z is labeled as imports. तो दोनों से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो हम जब देखते हैं डोमेस्टिक स्पेंडिंग स्पेंड होता है तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वहां पे हमारे पास एक दूसरा ऑटोनमस वेरिएबल आ जाता है, एंड दैट ऑटोनमस वेरिएबल इज लेबल्ड एज एक्सपोर्ट्स. दैट्स व्हाई वी से C प्लस I प्लस X, तो वो इंक्रीजिंग ट्रेंड बता देता है. तो दोनों का डिफरेंस जो हो जाता है, तो दोनों का डिफरेंस निकालने से हमें डिफरेंस ऑफ द लेवल ऑफ इनकम मिल जाता है. दैट इज from C plus I, it increases to C plus I plus X, because export is taking now place. We have included another variable, and that by the inclusion of that variable, income has increased from Y naught, or you label it whatever you want to, but income is always labeled by Y. So Y naught is increased from to Y1. Thus we say that exports do have an effect on the level of income of a country. On the other side, let's say we take up on x-axis saving, capital S, bada S, comma, I, capital I, bada I, comma, X, बड़ा X, जो एक्सपोर्ट्स को डिनोट करता है. और एक्स एक्सिस पे हमने क्या कहा था? हमने लेबल किया था इनकम लेवल, दैट इज Y नॉट. ठीक है, अभी आप एक पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें एक्स एक्सिस के लेवल में, एंड दैट इज सेड टू बी द इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट से जब दूसरा वेरिएबल आप इंक्लूड कर लेते हैं एक्सपोर्ट्स को, एक्स को, तो वी से I प्लस X, I, capital I plus X. So there is an increasing trend from the first line to the other line. What is the first line? Labeled as I. What is the second line? Labeled as I plus X. और वहां से आप जहां पे उनके perpendiculars draw करते हैं, and wherever you get the equilibrium level of income, you start up or you draw a line, and that line is known as a saving line. S. Now S can be 0 also, or it can be negative also. So the S line touches a y-axis below 0, below O, below the point of intersection. Now on the other side, we take up another case where we take up the imports. And how did we label imports? Anybody can answer? M से सर. G? M से Import M से नहीं denote नहीं, होते हैं. import हमने Z से किया था. Z, sorry. Capital Z से बेटा. To repeat, please do correction, make correction. It was labeled as Z, because ये इक्वेशन में आगे लूंगा, तो इसीलिए आप इसको चेंज ना करें. एक्सपोर्ट को कैपिटल X करें, इंपोर्ट्स को आप कैपिटल Z करें. तो इसी तरीके से जब एक्सपोर्ट्स का होता है तो उसी तरीके से आप डायग्राम बना लें. Y एक्सिस पे डोमेस्टिक स्पेंडिंग कर लें, X एक्सिस पे इनकम कर लें, और 45 डिग्री लाइन बना दें which tries to divide the X axis and Y axis into two equal parts. And what we do is that we draw a straight line C plus I, consumption plus investment. Now when we do imports, हम क्या करते हैं? We try to pay to the other country. So naturally C plus I will decrease, will fall down, नीचे आएगा, क्योंकि हम अभी पेमेंट कर रहे हैं. एक्सपोर्ट से हम पेमेंट रिसीव कर रहे थे, इंपोर्ट से हम पेमेंट दे रहे हैं. सो हमारे पास नया लाइन आ जाता है, एंड दैट इज लेबल्ड एज कंजम्पशन C, कैपिटल C, बड़ा C, क्योंकि मुझसे पूछा गया था कि कैपिटल C और स्मॉल C में क्या फर्क है. तो मैंने इसलिए अभी बताया है कि कैपिटल C बड़ा C को कहते हैं, और कैपिटल I बड़ा I को कहते हैं, और छोटे C को स्मॉल C कहा जाता है. ठीक है, यू कीप दिस इन माइंड. सो हमारे पास नया लाइन आ जाता है कैपिटल C प्लस I प्लस Z. तो पहला लाइन हमारे पास क्या आ जाता है?
y एक्सिस डोमेस्टिक स्पेंडिंग को टच करता है, that is C plus I. Since we are now importing, naturally we are doing payments to the other country. We are importing goods and services which are being produced by that country. So naturally we are paying to that country. So C plus I decreases, it falls down, and we get a new line, and that new line is known as a consumption plus investment plus imports. That is capital C plus capital I plus capital Z. Wherever these two lines touches the 45-degree line, we get the equilibrium level of income. Now in this case, what we do is that since consumption has been reduced, the line has been fallen down, so naturally income is going to reduce. So the income is going to fall from Y0 to Y2. Y2 मतलब x एक्सिस 0 पॉइंट की तरफ आ जाता है, तो दोनों को जब आप ज्वाइन कर लेते हैं, हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाते हैं, we get 2 points, and those 2 points are labeled as Y0 leading to Y2, meaning income level decreases now to Y2. Why in the previously we said income level increases. Why it is increased? Because of the exports. Now similar to that, we draw another diagram, and on y-axis we denote saving, comma, S capital, I capital investment, Z capital, comma, Z क्या चीज है? Imports, and X is known as an exports. ये हम Y axis पे show कर लेते हैं, और income level हम X axis पे show कर लेते हैं. तो saving plus imports, क्योंकि हम import कर रहे हैं, तो सेविंग्स हो सकता है इंक्रीज हो जाए, और ये इंक्रीज लेबल करता है इनकम लेवल को डिक्रीज करने के लिए. तो ये हमारे पास नेगेटिव भी आ सकता है. जीरो जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उससे नीचे भी आ सकता है. तो ये 4 डायग्राम्स इसके हो गए. ठीक है बेटा, द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. नाउ लेट्स से आई विल टेक अप अ क्वेश्चन. Listen very carefully. With respect to the equilibrium level of income, the multiplier effect associated with autonomous changes कौन से थे? Imports and exports. Imports और exports को हमने autonomous variable denote किया था. In exports and imports are similar but have opposite signs. एक्सपोर्ट होता है तो इंक्रीज होता है, प्लस आ जाता है. इंपोर्ट होते हैं तो नेगेटिव आ जाता है, माइनस आ जाता है. Thus, equal changes in exports and imports have no effect on the equilibrium level of income. अगर आप 10 रुपए का एक्सपोर्ट करें और 10 रुपए का इंपोर्ट करें तो वो इक्विलिब्रियम लेवल को नहीं इफेक्ट करेगा, क्योंकि आपको इनकम एक्सपोर्ट से जो इनकम मिल रहा है वो आप एक्सपोर्ट से इनकम जो मिल रहा है वो आप इंपोर्ट पे खर्च कर रहे हैं, तो वो जीरो आ जाता है, तो वो इक्विलिब्रियम लेवल को नहीं इफेक्ट करता. तो हमारे पास क्या आ जाते हैं? 2 इक्वेशंस आ जाते हैं. हमारे पास 2 इक्वेशन आते हैं. द स्पेंडिंग इक्वेशन आ जाता है और एक सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वेशन आ जाता है. स्पेंडिंग इक्वेशन क्या होता है? Y कैपिटल Y इनकम इक्वल्स कंजम्पशन C कैपिटल C प्लस I कैपिटल I इन्वेस्टमेंट प्लस X एक्सपोर्ट्स. On the other side, saving investment equation में क्या आता है? I investment plus exports, imports is equal to S. इसमें कोई सी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर लें तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे और वहां पे आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम मिल जाएगा. इक्वेशन मैं दोबारा कह रहा हूं. द स्पेंडिंग इक्वेशन को अज्यूम करें y is income equal to C, capital C, consumption plus I, capital I, investment plus X, exports. अभी इनकम लेवल में आप कंजम्पशन की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, कोई सी वैल्यू आप अज्यूम करें, वेदर इट इज इन रुपीज, डॉलर्स, पाउंड्स. अगर आप फॉरेन बुक पढ़ रहे हैं, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, अगर आप फॉरेन बुक पढ़ रहे हैं तो नेचुरली वो डॉलर्स और पाउंड्स में बात करेगा.
अगर आप पाकिस्तानी बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें लाजमन है वो रुपीस में बात करेगा, लेकिन आप पाउंड डॉलर में भी बात कर सकते हैं, आप रुपीस में भी कर सकते हैं। तो हमारे पास इनकम लेवल आ जाता है बराबर कंजम्पशन का प्लस इन्वेस्टमेंट का प्लस एक्स का, ठीक है। और सेविंग का क्या आ जाता है, सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वेशन क्या आ जाता है, आई प्लस एक्स इक्वल टू एस। दोनों में वैल्यूज पुट अप कर लें तो आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ऑफ अ कंट्री मिल जाता है। ये इन केस होता है जब आपके पास एक्सपोर्ट्स होते हैं, जब आपके पास एक्सपोर्ट्स होते हैं। डायग्रामेटिकली दो डायग्राम जो पहले मैंने एक्सप्लेन किए थे, विच आई एक्सप्लेन्ड फर्स्ट, दैट वाज बिकॉज ऑफ द एक्सपोर्ट्स, राइट। Now coming to the import, because we have taken import also as an autonomous variable affecting the level of income, since we are dealing with a four sector economy. Now when we are dealing with a four sector economy, to repeat again, we are taking into consideration exports and imports both as an autonomous variable. So naturally the first equation which I have given to you, or the first two diagrams which I have given to you, deals with the exports, and the last two diagrams deals with the imports. Now equation, in the equation form, the equation, two equation which I have just given to you, अभी जो आपको दिया गया है, तो वो आपके पास एक्सपोर्ट्स के बारे में है। इसमें वैल्यूज पुट अप करें, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम मिल जाएगा एक्सपोर्ट से। अभी हम इंपोर्ट्स की साइड पे आते हैं। तो इंपोर्ट्स का क्या होता है, इंपोर्ट्स में तो स्पेंडिंग इक्वेशन क्या होगा, Y, capital Y, income, plus Z, capital Z, equals capital C plus I, capital I, plus X. क्या, to repeat, Y plus Z equal to C plus I plus X. बेटा सब कैपिटल में है, सब बड़े लेटर्स हैं, ठीक है। इसमें आप वैल्यूज पुट अप करें, कोई सी वैल्यू, इंपोर्ट की वैल्यू ऐड करें, तो आपके पास इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम मिल जाएगा। तो ये हमारे पास द स्पेंडिंग इक्वेशन आ गया। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, आप, मुझे पता है कि ये जरा मुश्किल लग रहा है, राइट। स्पेंडिंग इक्वेशन हम डिनोट करते हैं y प्लस जेड equals to C plus I plus X. अभी बेटा मैं कैपिटल और स्मॉल नहीं कहूंगा. By now you should know that we are dealing with the capital letters. Wherever we are dealing with the small letters, then I'll be saying that we are taking into consideration the small letters. So the spending equation is equal to Y plus Z equals to C plus I plus X. Now, इसमें आप, what you do is you try to add up the import value. What you import value, import आपने कितने रुपीस का किया है, कितने डॉलर्स का किया है, कितने पाउंड्स का किया है, वो आप इसमें ऐड कर लें तो आपके पास इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम मिल जाएगा. क्लियर? समझ आ रही है बेटा? हेलो सर थोड़ी बहुत आ रही है. थोड़ी बहुत नहीं ना, अभी ज्यादा, तो मैं तो एक चीज 10 दफा बोल रहा हूं और फिर भी आप कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत आ रही है. हाँ, अभी तो आपको बहुत ज्यादा समझ आनी चाहिए, राइट. थोड़ी बहुत भी बहुत ज्यादा है. जब आप बुक पढ़ेंगे इंशाल्लाह बुक से आपको क्लियर हो जाएगा. अभी हम सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वेशन जाते हैं. एक अभी तक हमने स्पेंडिंग इक्वेशन किया था, अभी हम सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वेशन. अभी देखिए, स्पेंडिंग इक्वेशन हमने एक्सपोर्ट में भी किया था, सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वेशन हमने इंपोर्ट्स में भी किया था. अभी हम इंपोर्ट्स में द सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वेशन करते हैं. क्या आता है? आई, कैपिटल आई, बड़ा आई. मैंने कहा था मैं नहीं कहूंगा, लेकिन चले मैं अभी रिपीट करता हूं. कैपिटल आई प्लस एक्स इक्वल्स एस प्लस जेड. आपको अभी पता है कि एस क्या है? सेविंग, जेड इंपोर्ट्स, एक्स एक्सपोर्ट्स, आई इज इन्वेस्टमेंट. ये ना, बाय नाउ इट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स. ये नहीं कहना कि थोड़ी बहुत, क्योंकि बेटा फिर मैं खफा होता हूं. तो अभी आपको ऑन द फिंगर टिप्स ये होना चाहिए. कैपिटल आई इन्वेस्टमेंट प्लस एक्स एक्सपोर्ट्स प्लस एस सेविंग प्लस जेड इंपोर्ट्स. क्लियर? अभी इसमें आप इंपोर्ट्स की वैल्यू पुट अप कर लें, कोई सी इंपोर्ट. सपोज आप कह रहे हैं कि मैंने 10 रुपए का इंपोर्ट किया है, 20 रुपए का इंपोर्ट किया है, 10 पाउंड का इंपोर्ट किया है, 20 पाउंड का इंपोर्ट किया है, वो आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लें
तो आपके पास इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम मिल जाएगा। क्लियर? ये आपका डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन भी हो गया और ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन भी हो गया इन इक्वेशन फॉर्म। नाउ वी कम टू अनदर क्वेश्चन, an import function and expenditure multiplier, because naturally we are going to study about the multipliers also, but in detail I'll go in detail in the next lecture on the multipliers of the four sector economy. यहाँ पे आपको मैं briefly बताना चाहता हूँ कि what is an import function and the expenditure multiplier. To repeat, an import function and the expenditure multiplier. As income increases, consumption of domestic and foreign good क्या करेगा? डिक्रीज होगा? नहीं, इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा सर। इंक्रीज क्यों होगा? क्योंकि इनकम आपका इंक्रीज हो रहा है बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी तो आपको समझ आ रही है, आपने मुझे खफा कर दिया ना। चलें फर्दर। Further, the need for imported material is directly related to production levels. क्या है? इनकम इंक्रीज होगा तो कंजम्पशन ऑफ डोमेस्टिक और फॉरेन गुड भी इंक्रीज होगा, क्योंकि आप और चीजें भी खरीदनी शुरू कर देंगे। पहले आपने एक कुर्सी खरीदी थी, अभी आप 2 कुर्सियां खरीद रहे हैं। पहले आपने एक चीज इंपोर्ट की थी, सपोज आपने एक कंप्यूटर इंपोर्ट किया था, अभी 2 कंप्यूटर इंपोर्ट कर रहे हैं। तो क्योंकि ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका वहां पे इनकम इंक्रीज हो गया है। और दूसरी बात यह है कि इंपोर्टेड मटेरियल का क्या फायदा होता है? इंपोर्टेड मटेरियल जो आप करते हैं इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन लेवल्स, इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन लेवल्स। Thus, we assume that imports are positively related to income with, thus we assume that imports are positively related to income with Z equals Z naught, Z equals capital Z equals capital Z naught plus small z. Now small z, that is imported income, imported income. So I'll repeat the equation. Thus we assume that imports are positively related to income with z, that is z capital Z equal to capital Z naught plus small z, आजकल z को z भी ये कहते हैं, लेकिन we will say it as a z, but in the modern language it has been termed as a z now. So z y, where z naught मैंने आपसे कहा ना z is equal to z naught, तो आप कहेंगे कि z naught क्या चीज है? Z naught is an autonomous imports. What it is? It is an autonomous imports. और small z क्या होगा फिर? What is a small z? Marginal propensity. Marginal propensity to, yes sir. क्या है? आप दोबारा कहें। Marginal propensity to import, sir. Very good. It is a marginal propensity to imports. It means that you know now, by now you know. मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। Exports by assumption remains an exogenous variable. What is exogenous variable? शुरू में Variable that, हाँ, exogenous variable क्या है? sir, its value is being determined outside of the model. Which is Value comes from outside the outside. model, It is being fixed. like GDP is the exogenous variable of the, like demand is the exogenous variable of the factors affecting the demand and so on. So what we say is exports by assumption, that is we assume, because I have repeatedly said that all economic theories and laws are based on assumption. If any of that assumption is being violated, so that theory does not hold. What is the, that's why wherever we do or wherever we give something, we say ceteris paribus, other things remaining the same, other things, other factors not affecting, other effects are constant, that is other things remaining the same or ceteris paribus. So by now you should know what is an exogenous variable. Exogenous variable is a variable which lies outside the equation, like demand is a function of price and fashion, weather and so on. So demand जो है वो exogenous variable हो गया, price, fashion और जो चीजें हैं वो आपके endogenous variable.
Endo. Indo mean within the model, exo mean without the model. Clear so far? Now, we come to the next topic, trade balance and the level of income. Naturally, when we are talking about the imports and exports, we are going to take into consideration the trade balance also, because it is affecting the economy's level of income, and that economy is being affected by the level of Z exports and X imports and so on. Clear? So I'll take up trade balance and the level of income. So what is the trade balance and the level of income? A country's trade balance. A country's trade balance is its net balance of exports and imports. To repeat, a country's trade balance is its net balance of exports and imports. There is a net export. Net export क्या होता है? और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि सरप्लस ट्रेड बैलेंस, नेट एक्सपोर्ट्स या सरप्लस ट्रेड बैलेंस. कहीं पे बुक्स में आप देखेंगे सरप्लस ट्रेड बैलेंस. Surplus trade balance is the same thing as the net export. Net export is the same thing as the surplus trade balance. To repeat, there is a net export or surplus trade balance when exports, remember, when exports exceed, when export exceeds, export जब ज्यादा हो जाता है import से. Clear? And the net import and the net import, net जो आपका सही import आ जाता है, हर चीज रिमूव करने के जो लेवल import का आ जाता है, और इसको हम ट्रेड डेफिसिट भी कहते हैं, या इन अदर वर्ड टेक्निकली अप्रोप्रिएट वर्ड वुड बी डेफिसिट ट्रेड बैलेंस. एक साइड पे हमने कहा सरप्लस ट्रेड बैलेंस, जहां पे आपके सरप्लस आ जाता है, ज्यादा हो जाता है. एक जगह पे हम कहते हैं डेफिसिट. डेफिसिट मीन जरा कमी आ जाती है. डेफिसिट जैसे आपने पब्लिक फाइनेंस में पढ़ा होगा, डेफिसिट फाइनेंसिंग. डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? तो वो डेफिसिट, यहाँ पे हम कहते हैं डेफिसिट ट्रेड बैलेंस एंड द इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट. जब हम कहते हैं डेफिसिट ट्रेड बैलेंस, तो वहाँ पे इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स, वाइल वाइस वर्सा फॉर द ट्रेड सरप्लस. ट्रेड सरप्लस के इसका उल्टा आ जाता है. उल्टा क्या होता है? एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स कम ज्यादा होते हैं, एक्सपोर्ट्स कम होते हैं, और यहाँ पे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का प्रॉब्लम बन जाता है. तो एक जगह सरप्लस ट्रेड बैलेंस आ जाता है, एक जगह पे डेफिसिट ट्रेड बैलेंस आ जाता है. क्लियर? If exports and imports are exogenous variable, that's why I have introduced the word exogenous again, because I'll be using it now. If exports and imports are exogenous variables, the variables which lies outside the model, which means export is a function of, import is a function of, right? A country's income level is positively related to its net export balance. A country's income level is positively related to its net balance, export balance. लेकिन मैंने एक बात की थी कि हम हर चीज के साथ एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज सेटरिस पैराबस. जो जैसे भी आप उसको प्रोनाउंस करें, मैं आपको स्पेलिंग कह देता हूँ, CETERIS, सेटरिस पेरिबस, PARIBUS. प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस हो सकता है, तो हम हर जगह पे अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम का अजम्पशन लगाते हैं, सेटरिस पैराबस का अजम्पशन लगाते हैं. तो यहाँ पे भी हम कहते हैं कि a country's income level is positively related to its net export balance, other things remaining the same. Ceteris paribus. अगर इसको हम निकाल दें, ceteris paribus को other things remaining the same इससे निकाल दें, तो ये फैक्ट नहीं रहेगा, ये गलत भी हो सकता है. Clear? This means that a country at less than full employment. क्या मतलब है? A country at less than full employment. A country less than full employment would seek an expanding net export balance. मैं रिपीट करता हूं, आप लिख लें. This means that a country at less than full employment would seek an expanding net export
balance. Clear बेटा? Now सर दोबारा बोलेंगे? अच्छा मैं दोबारा कह देता हूँ, आप लिखना हाँ, चाहते हैं वो बोल। पूरा कह दूं यस या सर, सिर्फ ये लाइन कह दूं? जी वही सर लाइन। पूरा। अच्छा मैं पूरा कह देता हूँ. If exports and imports are exogenous variable, the variables which lies outside the model, जैसे मैंने आपको जीडीपी की एग्जांपल दी, जैसे मैंने आपको डिमांड की एग्जांपल दी, तो इसी तरीके से हम एक्सपोर्ट को भी फंक्शन बना सकते हैं, इंपोर्ट को भी बना सकते हैं. ठीक. तो if exports and imports are exogenous variable, a country's income level, is positively related to its net export balance. इसके साथ assumption लगा दें ceteris paribus का या other things remaining the same का. इसका क्या मतलब बन गया? This means that a country at less than full employment. This means that a country at less than full employment would see an expanding net export balance. Would see an expanding net export balance. Clear हो गया बेटा? Right. Now we come to the next one, that is an import and export functions. Generally हमने हर जगह पे लिखा है import और export क्या चीज होती है. तो अभी an import and export function क्या है, तो आप इसको खुद पढ़ें. एन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फंक्शन को आप खुद पढ़ें. नहीं समझ आएगी देन आई एक्सप्लेन इट. इट इज़ वेरी सिंपल. ये ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियसली एक्सप्लेन कर चुका हूँ इन डिटेल, तो इसीलिए ये आप खुद करें. इसमें क्या होगा, आपके पास इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट, आपने इक्विलिब्रियम लेवल निकालना है जहाँ पे आपने कंजम्पशन को बराबर करना है कंजम्पशन प्लस बी वाई डी, दैट इज द बी कोएफिशिएंट हो गया, वाई डी इज द डिस्पोजेबल इनकम, और वाई डी डिस्पोजेबल इनकम किस चीज के बराबर हो गया, इज इक्वल टू इनकम कैपिटल वाई, आई इज इक्वल टू आई नॉट, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू आई नॉट, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, and z is equal to z naught plus zy, small z and capital Y. तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा, इक्विलिब्रियम हमारे पास आएगा y इक्वल्स, चले मैं दोबारा कह देता हूँ, लिखें आप, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स could be related, domestic exports could be related to domestic imports, and therefore income through changes, and therefore income through changes in a second country's level of income. और एग्जाम्पल मैंने क्या दिया, इसका बेसिक एग्जाम्पल बेटा लिंकेज मॉडल है. क्या है, विच इज बीन टर्म्ड एज अ लिंकेज मॉडल ऑफ इनकम लेवल. ठीक है, आप लिंकेज मॉडल है इसका. तो लिंकेज मॉडल हमारे पास क्या आ गया, कंजम्पशन सी, कैपिटल जहां पे स्मॉल होगा मैं कह दूंगा सी नॉट प्लस स्मॉल बी, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्मॉल डी. वाई स्मॉल डी का क्या मतलब है, डिस्पोजेबल इनकम. स्मॉल बी क्या है, डिस्पोजेबल इनकम का कोएफिशिएंट हो गया है. और वाई डी किस चीज के बराबर है, ये आपके कैपिटल वाई इनकम के बराबर है. डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू वाई, आई इज इक्वल टू आई नॉट, I, capital I is equal to I subscript 0 or not, X is equal to X naught, and Z, capital Z equals Z naught plus small z, Z naught plus small z Y. क्लियर हो रहा है. इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट, अभी सर इक्विलिब्रियम दोबारा कहाँ, बोले? अच्छा दोबारा बेटा कितनी दफा बोलूंगा, और हाँ चले मैं कहता हूं आस्ता आस्ता और आप लिखें, मैं दोबारा फिर नहीं रिपीट करूंगा. गिवन, या ऐसे चलें, ऐसे लिख लें, अ लिंकेज मॉडल, क्योंकि अभी आप पूछेंगे लिंकेज मॉडल क्या चीज होता है. अ लिंकेज मॉडल ऑफ इनकम लेवल्स, अ लिंकेज मॉडल ऑफ इनकम लेवल्स demonstrates that
domestic imports, that domestic imports affect A, not E, affect affect the level of domestic exports, affects the level of domestic exports through a feedback effect. इसीलिए फीडबैक इफेक्ट यहाँ पे आता है, इसीलिए हम कहते हैं द लिंकेज मॉडल. और लिंकेज मॉडल किस चीज का? लिंकेज मॉडल ऑफ इनकम लेवल. अभी मैं जल्दी में कहता हूँ. द लिंकेज मॉडल ऑफ इनकम लेवल्स डिमॉन्स्ट्रेट्स that domestic imports affects the level of domestic exports. Domestic imports affect the level of domestic exports through the feedback effect. Through the feedback effect. That's why we say the linkage model of income determination. Linkage है सब में, तो इसीलिए हम feedback कहते हैं. Import, export, export, import, import, export and so on. अभी इसको हम कैसे उस पर शो करेंगे? Given C, capital C is equal to C naught plus B, small b, coefficient जिससे कहते हैं हम small b, y, capital Y, subscript small d. Small d क्या क्या मतलब है? B, coefficient of Y, D, disposable income. कंजम्पशन तो हमें पता लग गया है, लेकिन डिस्पोजेबल इनकम का क्या है? डिस्पोजेबल इनकम वाई डी इज इक्वल टू द इनकम लेवल. क्लियर? आई इज इक्वल टू आई नॉट, आई इक्वल्स आई नॉट, एक्स इक्वल्स एक्स नॉट एंड जेड इक्वल्स जेड नॉट प्लस जेड वाई, स्मॉल जेड वाई. तो इक्विलिब्रियम आएगा y equals c naught plus I naught plus x naught minus z naught. Y equals c naught plus I naught plus x naught minus z naught divided by over, जिसको हम कहते हैं divided by 1 minus b, small b, that is the coefficient of disposable income, minus small plus small z, plus small z. 1 minus b plus small z, small z. To repeat, equilibrium exists where income equals c naught plus I naught plus x naught minus z naught divided by 1 minus b, small b, remember the coefficient of disposable income, plus z, small z, the zy जिसको हमने कहा था एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जब शो किया था स्मॉल z से, जो जिसको हमने मार्जिन प्रोपेंसिटी इन्वेस्ट और उस वो कहा था, तो स्मॉल z. क्लियर? नाउ बेटा इसको पढ़ लें. इफ देयर इज एनीथिंग, कोई भी आ जाए तो मुझसे इसकी पिक्चर भी ले सकते हैं, फोटोकॉपी भी ले सकते हैं. लेकिन इससे पहले जितना कुछ मैंने आपको पढ़ाया था, वो एक स्टूडेंट है, मुझे लग रहा है फर्स्ट सेमेस्टर का है, फैजान को मैंने दिया है. उसने सारे पिक्चर्स ले लिए हैं और उसको मैंने एक रिक्वेस्ट भी किया था कि जिस दोस्तों को आपको, जिस क्लास फेलोज को नहीं समझ आ रही या उनके पास मटेरियल नहीं है, उनको दे दें. और उन्होंने मुझसे प्रॉमिस भी किया था कि मैं व्हाट्सएप पे करूंगा. फैजान खान नाम है उसका. तो सर उन्होंने शेयर किए हैं ग्रुप में सारे. तो बस बेटा अच्छा है ना. अभी दूसरा लेक्चर भी हो जाए ना, दूसरा, तो फैजान को मैं कह दूंगा या आप कह दें कि आप मेरे पास आ जाएं मैं क्लास में, तो वहां से पिक्चर मैं उनको पिक्चर्स दे दूंगा जो मैंने अभी पढ़ाया है या दूसरे लेक्चर में भी पढ़ाऊंगा. एक लेक्चर में 2-3 पेजेस के लिए वो बेचारा क्या आएगा, टाइम वेस्ट करेगा. तो 2 लेक्चर्स के नोट्स वो लेके तो वो आप में सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा. तो इंशाल्लाह आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. लेकिन साथ में सिर्फ नोट्स ना पढ़ें, साथ में बेटा मेरा लेक्चर सुने, मेरे एक्सप्लेनेशन पढ़ें और मेरे सब कुछ करें. और या कोई छोटी सी आसान सी किताब जो आपके लिए आसान है, जो आसान है, मेरी वर्ड्स ना हो, इस बुक के वर्ड्स ना हो, आप जिस बुक से भी पढ़ना चाहें, इट इज एक्सेप्टेबल टू मी. थैंक यू फॉर टुडे. थैंक यू सर.
थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। सॉरी बेटा। एक्सक्यूज मी क्लास। जी जी। सर, ये आपने जो असाइनमेंट दिया है, हाँ उसमें जो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर है और डायनेमिक मल्टीप्लायर जो जी है, जी। सर उनमें वो कैलकुलेशंस भी करने हैं, कैलकुलेशन डेरिवेशन करनी है बिल्कुल। करनी है उसमें। हाँ, कैलकुलेशन करेंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, अगर कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो लाजमन है तो 5 में से 2 नंबर मिल जाएंगे, 3 नंबर मिल जाएंगे। कैलकुलेशन करेंगे तो 4 भी हो सकते हैं फिर। ठीक है बेटा, ठीक है। जितना भी आप कर ठीक है सकते सर। हैं उसमें कर लें और उसको डाउनलोड कर लें। मैंने बहुत सिंपल दी है, बहुत सिंपल दी है, लेकिन डायरेक्टली सर उससे लेकिन ना टेक्निकल है। लेकिन उससे डायरेक्टली सिंपल है ना लेकिन कॉपी टेक्निकल करें। हाँ, है। लेकिन डायरेक्टली कॉपी ना करें। अगर आपने डायरेक्टली कॉपी कर नहीं दिया तो फिर मेरा आप पे शक बन जाएगा। नहीं नहीं सर, डायरेक्टली तो आप कुछ भी नहीं लिखा, सारा अपने वर्ड्स में है। अपने वर्ड्स में करें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कल को आपको थीसिस करने पड़ेंगे, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, और वो सब कुछ आपने अपने अल्फाज में करना है। ठीक है सर बेटा। ये एमपीसी की भी पूरी डेरिवेशन करनी है, नहीं, मार्जिनल डेरिवेशन ना करें प्रोपेंसिटी कि टू बता दें कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या क्या ठीक क्या है, होता है, और और डायग्रामेटिकली बता फॉर्मूला दें। लिख लें। हाँ, फॉर्मूला ठीक है लिख के सर। और डायग्रामेटिकली बता दें। वो एक लाइन ठीक है, है एक्स सर। एक्सिस वाई एक्सिस में एमपीसी बता दें, 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस वाला सब कुछ वो कर ठीक दें। है सर। ठीक है बेटा। ठीक है सर। थैंक यू ठीक वेरी है मच सर, बेटा, थैंक थैंक यू यू, वेरी अल्लाह मच। हाफिज। अल्लाह हाफिज।